Today we are going to discuss a new chapter in geography named water resource. You might be having a question, sir, whether this chapter has not been deleted from the syllabus that has been revised recently by CBSE. Yes, the chapter has been deleted, but one thing is there. This chapter is having a number of questions that are related to our daily life. This chapter is very much related to our daily life. So as the number of questions also, that is very much informative, that we should know their answer also. And for mapping, questions will be come from this particular chapter. Locate and label about the multi-purpose river valley projects. So you may raise the question, sir, then why you are emphasizing upon such a detailed explanation? Why not we are just seeing only those topics that we have to prepare for the examination? Dear students, the purpose of the study to just get knowledge rather to get marks. If you are having the knowledge, you will get definitely the good marks. If you are having the knowledge, you can easily interpret the different issues related to the same. So just focus upon acquiring more and more information, more and more knowledge related to the topics. What do you think? The chapters, the topics that have been deleted as per the revised syllabus, those topics are not important. Those chapters are not important. No, these all are important. Actually, when the syllabus was framed earlier, before this pandemic, all the chapters having its relationship with the next chapter. If we are going to learn the next chapter and in between a number of chapters have been deleted, it may create difficulties to get the good concept related to the topics that we are going to discuss. So as far as syllabus is concerned, it is there. But it is the role of we teachers to let you know about the complete information related to the same topic. In that particular scenario, it is necessary that we should know also about the topics that have been deleted, but these are very much important. What we will do? We will just discuss these topics in a short duration of time. We will not go in detail. So, in that particular point of view, it has been decided that we should know about this particular topic. It is very much common topic. As you know that water as a resource, you know the meaning of resource. Resource means anything that having the capacity to satisfy human needs. So in that particular context, if you see, water is the precondition of existing of all forms of life on the earth. As I have written, why water is regarded as a resource? Because it is an elixir of life, means precondition. Without water, no life. I am not talking about life in terms of only human life. I am talking about flora and fauna also. Water is essential. And do you know, it is the availability of water, presence of water on the earth that makes Earth as a unique planet. It is called blue planet. Why? Because the availability of water. Till date, no other planet in the universe having water and life. Till whatever information we are having till today, till now. So it is the availability of water that makes this earth unique in our universe.
So let's see the other importance of water. Water is used in our daily life for cooking purpose, for washing, for bathing, in industry also, for farming also. In everywhere, water is involved. Whatever products we are using, directly or indirectly, they all are just supported by water. So water is essential. Even our body. Do you know? Nearly 70% of our body weight is comprising the ability of water inside our body. Have you heard about dehydrated? The body has got dehydrated when you are suffering from some sort of disease and you are having the loose motion on that time. What your doctor say that you become dehydrated means आपके शरीर से water कम हो चुका है. So water आपके लिए जरूरी है. ये water है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. It is a compound. और साथ साथ the essential minerals that we need for our mental and physical growth, we are also getting those minerals through this water. So water is very very important. कितना important है, कितनी बार very very कम, ये मुझे नहीं पता. बस एक लाइन, ये वाटर के बिना धरती पे जीवन संभव नहीं है. ये इसकी सबसे बड़ी महत्ता है. नेक्स्ट देखिए. Also responsible for maintenance of atmospheric process that regulate the global energy, heat and heat balance. अब इसको थोड़ा सा समझिए लिटरली. Do you know about water cycle और hydrological cycle? Hydrological cycle. ये क्या है? वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, क्लास 5 में कि अंडर द सनलाइट water bodies evaporates, it rises up forming cloud, condensation takes place and rainfall occur. This is one of the major source. यही है सबसे बड़ा सोर्स वाटर के अवेलेबिलिटी का धरती में. रेन कंटिन्यूअस फ्लो, ये कंटिन्यूअस एनर्जी है. तो ये वास्तव में है क्या? अब गौर से देखेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को ये रेगुलेट करती है. दैट रेगुलेट द ग्लोबल एनर्जी एंड हीट बैलेंस. बहुत इंपॉर्टेंट. In class 9 you people have read about climate change. If you correlate this particular term with the climate, you will understand what it means. So we come to know about why water is called a resource. In simple words, you can write the uses of water in your own words, no problem. But you have to write these 2 points along with your own interpretation that you feel that water is important. So now, what kind of resource water is? Usually, we accept that water is a renewable resource. Water is renewable resource. Means sometimes we also say that water is a free gift of nature. Is it so? You may say, yes sir. We are not paying anything for water. Water is available everywhere. Really? We are not paying for that? Whenever you are feeling thirsty, while in due course of a journey, you are purchasing a bottle of water, paying 50 to 20 rupees. If water is free gift of nature, then why you are paying for that? Why? No. There is a problem, there is a condition. Even though water is a renewable resource, but we cannot say that it is a free gift of nature. Why? Because just go through the availability of water over here. What kind of water about which we are talking? We are talking about the water that is fit for drinking. That is the basic concept. Means we are discussing about the qualitative aspects of water. Qualitative.
There are two aspects of ability of water that we will discuss later. It is quantitative and qualitative. Quantitative related to the quantity of water and qualitative related to the quality of water. When we are talking about water in this particular chapter, we are talking about the qualitative aspects of ability of water, means the water that is fit for drinking. तो उस aspects में अब water की presence को हम लोग देखते हैं. कुछ facts that we should know. What are they? Water is a free gift of nature, but it is not so. Water actually, it is a precious gift of nature, not a free, it is precious gift. A precious क्या है? जैसे मैंने कहा कि without water, life cannot be sustained on the earth. We cannot survive. No other life form will survive. First form of life just evolved inside the water, as scientists have discovered. Now, see the facts. There is no alternative for water. Water की जगह पे कुछ सभी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. अब बोलोगे सर पानी की जगह पे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, तो बात है बच्चों. Have you ever gone through the constituents of a soft drink or cold drink that you usually drink? वो किस चीज से बनी है? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे मैक्सिमम पार्ट तो वाटर है. आप बोलेंगे सर मैं दूध पीऊंगा. अब दूध को देखिए, दूध क्या है? मिक्सचर है, कोलाइड है, क्या है? ये आपने पढ़ा होगा. खैर ये मेरा विषय नहीं है. तो दूध को भी देखेंगे तो दूध में भी क्या है? वाटर. हर जगह हमारे शरीर के अंदर वाटर है, मैंने आपको बताया. तो अब देखिए वाटर कितना महत्वपूर्ण होता है. और हम बात क्या कर रहे हैं किस वाटर की? फ्रेश वाटर की, जिसको कहते हैं फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी जिसको कहते हैं क्वालिटी वाटर. हम उस वाटर की चर्चा कर रहे हैं. नालियों में बहने वाली पानी की चर्चा नहीं करते. Even I am not talking about the water available in ocean, because that is not fit for drinking. That cannot be considered a fresh water. We cannot drink it. So पानी तो है. आप जानते हैं कि धरती की 3/4 पार्ट या 2/3 पार्ट कितना कहते हैं? 3/4 कहिए, 2/3 कहिए, पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर. मीन्स आपके ओशन में हो 1/3 या 1/4 में धरती है. स्थिति इतनी विशाल राशि है, जल राशि धरती पे, तब भी हम कहते हैं कि सर पानी की समस्या बहुत विकट है. Have you ever noticed during the summer season in your locality you might be feel कि on a number of hand pumps there is a long queue of people having some buckets standing only for getting water. A number of hand pumps have been just dried up. लोग कहते हैं पानी सूख गया, पानी नहीं आ रहा है. You might be also realize during the summer season, even you are having a water pump through which the water is taken from groundwater and just lifted to your water tank. You might be feeling that during the summer season it takes more time to fill the tank. Why? You might be notice. During the summer season, the water level, even inside the rivers also, gets down and down. कहते हैं नदियाँ सूख रही हैं, पानी की मात्रा कम है. क्यों? इतनी चिंता क्यों होती है? ये क्या होता है? अब इसी को देखना है. हमें देखना है कि फ्रेश वाटर मौजूद कहाँ. तो फ्रेश वाटर मौजूद है रिवर्स के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, आइस कैप्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में. फ्रेश वाटर. लेकिन हमारे लिए कौन सा वाटर अवेलेबल है? ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर. दैट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो देखिए फ्रेश वाटर और ओशन वाटर, यानी जिसको कहते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी, इस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. सी, in today's changing conditions, water is no more freely available. It has become scarce. Scarce का मतलब होता है कि ये easily available नहीं है. Next, 97.5% of total volume of water, the
भी धरती पे वाटर है, these are in the form of oceans. While only 2.5% ये जो फ्रेश वाटर है केवल 2.5% बाय वॉल्यूम इज फ्रेश वाटर। अब इस 2.5% के अंदर भी देखिए क्या लोचा है। In 2.5% that is the whole fresh water, 70% of the fresh water is found in the ice sheets and glaciers. Ice sheets और glaciers के रूप में है, यानी glaciers आप पढ़ चुके हैं, slow moving river of ice, and these glaciers are also just giving origin to a number of rivers that we are enjoying, that is river Ganga, Yamuna. These are the perennial rivers that are having its origin from these glaciers. तो ये फ्रेश वाटर हम वहाँ से भी प्राप्त करते हैं। ये बात अलग है कि नदियों के पानी को हमने फ्रेश रहने नहीं दिया। हम पढ़ेंगे कि ये फ्री कैप्टिव ऑफ नेचर है। वाटर जितना ये देखिए 2.5% जो फ्रेश वाटर है वो भी काफी है मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म बनाई, परंतु हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या किया? इस 2.5% जो फ्रेश वाटर है इसका 70% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स को, तो उसको भी भूल जाते हैं, बिकॉज दैट वी कैन नॉट एक्सेस वेरी इजीली और डायरेक्टली ओवर देयर। तो अब देखिए क्या है उसके चक्कर, लिटिल लेस देन 30% के आसपास इज स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर। अब इस ग्राउंड वाटर में पानी इतना है कि यूज कर सकते हैं, बट वी हैव जस्ट depleted these resources also. Excessive use of water, contamination of water, that lead to the decrease in the water level as well as the quality of water is also deteriorated. अब ये पानी भी हम नहीं पी पाते। तो आज के समय में क्या है? मार्केटिंग का फंड है, वाटर प्यूरिफायर, मिनरल वाटर प्यूरिफायर। What is this? What is this? How the things has been occurred? How plant लगाइए? I don't know what is the meaning of our plant. ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे पानी का प्यूरिफिकेशन, क्या पहले पानी साफ नहीं होते थे? या हमारे पास कोई अपना तरीका नहीं? ये मार्केटिंग की बात है। ये क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? इसलिए कि whatever fresh water resources that we are having, we have also polluted that particular source of fresh water. तो इसी कारण water becomes scarce today. आज हम इधर का पानी नहीं पीते, हम बोलते नहीं फ्रेश वाटर पीएंगे, मिनरल वाटर पीएंगे, ऐसा पानी है। पानी का व्यापार है और ये पानी का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने गौर किया होगा, in your localities, a number of water plants are there that are supplying the mineral water home to home. पता नहीं क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब इंडिया की कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में इंडिया रैंक्स 123 in terms of water availability per person per annum। दुनिया में हम 133वां स्थान रखते हैं। हम कहते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर्स, फिर भी ये कहानी है। तो कई बार तो ये लगता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ कंट्राडिक्शंस। सब कुछ उपलब्ध है, हम यूज नहीं करते, उसके बाद रोना पड़ता है। We, if you are having the skill, we have to develop our resources as per our needs, and here we are lacked. So next, see this particular this pie chart. I have tried my best to draw a pie chart to explain the concept. See, this is all about the fresh water, and one pie chart is related to the all forms of water that is available. So, as I have written over here, as you are seeing this particular chart, 97.5% water is in the form of ocean water. That is salty water, not fit for drinking. It is not a fresh water, and only 2.5% of water can be considered as fresh water. And take this particular chart and relate this. Out of this 2.5% of fresh water, 77% is in the form of ice caps and glaciers. 22% is in the form of groundwater.
and 1% is the surface water. So what you come to know? We come to know that water is available on the earth, but the water for which we are suffering, the water that we need, the ability of that water, means I'm talking about the fresh water, is not educated as we required. Why? Because as I have said, that means कि यहाँ पर पानी की उपलब्धि के दो aspects हैं. मैंने क्या कहा था? तो availability of water के दो dimensions, qualitative and quantitative. क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा के रूप में, क्वालिटी मतलब उसकी उपयोगिता, जो उपयोगिता यानी कि फ्रेश वाटर की बात में करना. तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी we are very we are not having sufficient amount of fresh water. Do you know, as per a survey in India, nearly 60% population are deprived to get fresh water. In India, millions of people die every year only due to the waterborne diseases. बहुत ही डरावनी आंकड़े हैं. But we are not talking about this. We are talking about pandemic, this COVID. आपको पता है कि दुनिया में टीबी से कोविड की तुलना में पर ईयर अधिक लोग मरते हैं, कई गुना अधिक मरते हैं. उसकी चर्चा नहीं होती. टीबी क्या एक पेशेंट अपने साथ साथ 10 पेशेंट को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है. कोविड में 1 से 2 या 2 से 3% के बीच होती है. लेकिन ये फैलती हुई डिजीज है, जिसमें मेडिसिन नहीं, इसलिए इतनी हैवॉक. लेकिन कई और बीमारियां हैं, उसमें से वाटरबोर्न डिजीज, डायरिया, वाटरबोर्न डिजीज, उससे लोग मर जाते हैं, लाखों लोग. So if you see the whole dimension, the qualitative aspects of water, the availability of quality water is very much scarce, and quantitative aspects, पानी तो बहुत है, समुद्र में पानी है, पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन आवत हंस, ये इसी पर सटीक करेगा. संदर्भ तो दूसरे हैं इसके, परंतु यहाँ पे सटीक करेगा. तो we are focusing on this qualitative dimension of water, and this lead to the water scarcity. जो मैंने यहाँ लिखा है, scarce, water becomes scarce, means water की scarcity हो गई. What is the meaning of water scarcity? किसी चीज की scarcity का मतलब क्या है? कमी का मतलब क्या है? अभाव का मतलब क्या है? It means कि when anything is available less than its demand, that lead to the scarcity. यानी किसी चीज की उपलब्धता उसकी मांग की तुलना में कम हो तो उस वस्तु की स्कार्सिटी कही जाती है, अभाव कही जाती है. And water scarcity is one of the acute problem that is going on in India and as well as in the world. According to what an estimation कि by 2025 India is going to face a very acute water crisis. Can you believe it? आप बोलेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं. Are you mad sir? No, I don't. मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ. आप बोलेंगे सर देखिए विचारों पर बाढ़ है, पानी. आप बोलते हिंदुस्तान में पानी की कमी होगी. सर बेड़ा होगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये पानी तो है, but can you drink it? Can you use it? ये पानी नहीं है, तबाही है. तबाही कैसे है? जब हमने नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो नेचर ने बैलेंस किया. हमने नदियों के रास्ते को रोका तो
नदियां जब गुस्से में आती हैं तो अपने रास्ते खुद बना लेती हैं, तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई। पुराने समय में बाढ़ नहीं आती थी, प्राचीन काल में ऐसे एविडेंस बहुत मिलकर पड़े, क्योंकि उस समय तो नेचर फ्रेंडली थी। लेकिन अब क्या है, ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, सड़कें चाहिए, ब्रिज चाहिए, रोड चाहिए, ये वो दिन है। हमने क्या किया, अब हम जंगलों में घुस गए, जंगली जानवरों के इलाकों में घुस गए, अब जंगली जानवरों से क्लैश हो। हम अब नेचर के रास्तों में चले गए, नदियों के रास्तों में अब क्या करते हैं, हम घर बना रहे हैं। अब नदियों की पेटी में आप घर बनाएंगे, और जब पानी नदियों में जलस्तर ऊंचा होगी बारिश के समय में, आपको लगेगा बाढ़ में फंसे। अब खड़े कहाँ यार, अब रोड पे खड़े होकर घर बना लोगे, और रोड पे अब बोलोगे एक्सीडेंट हो गया, तो बोलोगे इसमें घुसने का प्रश्न है नहीं, आप वहां पे घुस बैठे। तो एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट, और यही है वाटर स्कार्सिटी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी and how we can overcome the problem of water scarcity. Now students, let's see what we have discussed. I have just transformed our discussion in the forms of words, some statements. Water scarcity is a situation which is the result of shortage of water. Or how it occurs? When the supply of water is less than its demand, it leads to the scarcity of water and scarcity of anything. When there is a difference between supply and demand, when supply is less and demand is high, it leads to the scarcity. So I in the form of water. और water scarcity में क्या कहा कि हमें डिस्कशन करना है qualitative ability of water, यानी qualitatively यानी water quality water, fresh water की ability की बात कर रहे हैं, वो कब है? क्वांटिटेटिवली हमारे पास बहुत है। तो अब ये क्यों होंगे? इट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या का सीधा दबाव एबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर आती है, फ्रेश वाटर, एंड कॉन्सिक्वेंट वाटर डिमांड्स एन अनइक्वल एक्सेस। अब ये अनइक्वल एक्सेस मींस प्लीज गेट इट। You are blessed by the God that you are enjoying a good life in your home. You never stand in a queue to get a bucket of water. Never. You are having the egg supply, where you are having your house is equipped with the water pump. Whenever you need the water, you just press the button and put on the water pump, and you are getting the water. But such kind of fortune do not have. As I have stated, more than 60% of Indian population is deprived to get fresh water. Unequal access. You are having access of water. You are using that fresh water to wash your bike, wash your car, just clean your house. That fresh water. And somewhere people are just dying only due to the scarcity of water. Unequal access. Even waterfall is uneven. In some parts of India, great amount of waterfall is there. But in arid region, the western part of Rajasthan, very less amount of water is there. So this is the scarcity of water, leading to the scarcity of water, uneven distribution of water, uneven access of water. This is the basic reason behind that lead to the scarcity of water. तो नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं जब एक स्कार्सिटी है तो इसके कारण क्या है? मुख्य रूप से कारण ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एग्जैक्टली इज नॉट द रियल कॉज ऑफ द वाटर स्कार्सिटी। इफ वी आर हैविंग द स्किल टू मैनेज आवर रिसोर्स एज और इन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। But we are very much lack to manage our resources. We are not managing our resources, neither human beings nor the natural resources like water. Next, deforestation, natural resource. You know that there is a direct relation with the forest cover and rainfall. A less amount of
Availability of forest means less amount of rain. Means availability of water become lesser and less. Next, industrialization. Industrialization itself requires huge volume of water for the production activities. Once the MNCs, multinational corporations, multinational companies have established their units, they are equipped with huge machines, they need more and more water. और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर डिमांड ऑफ वाटर, और ये क्या करती है, वाटर को यूज करती है, वाटर को कंटामिनेट करके फिर से ये थ्रो आउट कर देती है नदियों में, ये पानी चली जाती है, जो नदियों का पानी फ्रेश वाटर होगी कंटामिनेट होगी, इसको मैनेजमेंट। नेक्स्ट, लेसर एंड इरेक्टिक रेनफॉल, कहीं पानी अधिक है कहीं कम है। अभी देख लीजिए हिंदुस्तान के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति, कहीं सूखे की स्थिति, ये इरेक्टिक एंड लेसर रेनफॉल दैट आल्सो लीड टू द वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। सिंपल, when the population increases, definitely urbanization will take place, definitely industrialization will take place, definitely deforestation also takes place. क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सारी चीजें होंगी, नए नए शहर बसेंगे। देखिए शहरों की रिक्वायरमेंट वाटर के टर्म्स में अधिक है इन कंपेयर टू द रूरल एरियाज। गांवों की तुलना में शहरी जीवन अपने आप में पानी की अधिक डिमांड करता है। जो लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है शहरों की, दैट नीड्स मोर वाटर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, वो सिंपल, आप नहाने जाते हैं शहरों में, आपके पास क्या है, बाथरूम इज इक्विप्ड विद शावर्स। झरने में आप नहाते हैं, दैट रिक्वायर्स मोर वाटर इन कंपैरिजन व्हेन यू आर टेकिंग बाथ विद द हेल्प ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर। बाल्टी में भरे हुए पानी से आप नहाएंगे तो कम पानी में आप स्नान कर लेंगे, लेकिन जब आप शावर के नीचे नहाएंगे तो आप अधिक पानी का इस्तेमाल करेंगे। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट also required good amount of water. Flush required huge volume of water at a time. तो balance करने के लिए next, more and more use of water in agriculture to fulfill the growing demands of the growing population of food. We are just running to grow more and more crop, and for growing we are using modern technology, HYVC, the green revolution and all, and that also required huge volume of water for the purpose of irrigation. That also lead to the depletion of water. That also deteriorate the quality of water. क्योंकि ये जो वाटर जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे खेतों में, वो वाटर में पेस्टिसाइड घुल जाएगी, फर्टिलाइजर घुल जाएगी, केमिकल्स घुल करके वो जस्ट वो नीचे ग्राउंड वाटर में मिलने लगेगा, सीधे जो और ये जब रेनफॉल होती है यही वाटर फिर नदियों में जाके मिल जाती है ओवरफ्लो करके। तो ये जो पानी है वो नदियों के पानी को भी कंटामिनेट करता है, तो एक्वाटिक लाइफ को भी प्रभावित करता है। जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमारे थ्रेटन में होती है अल्टीमेटली, दैट इज द मेजर रीजन। तो ये कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और इससे पूरे सिनेरियो में एक चीज देखिएगा, तो सिंपल एक लाइन में कहूं मैं, तो वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई वी नीड रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर नेशनल डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्स इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा, और यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान। So we have gone through the process. In that particular scenario, we come to know that water is precious resource for us. So now, in that particular condition, when there is a threat, great threat for availability of fresh water, when we are fighting for the qualitative scarcity of water, there is a need to conserve water. Why we should need to conserve water? Why do we conserve water? Water को क्यों बचाएं? फिर मैं बात कर रहा हूँ वाटर का मतलब फ्रेश। देखिए मैंने लिखा
conserve and manage our available water resources. ये कंजर्व करना पड़ेगा, तभी जो उपलब्ध पानी के सोर्सेस है उसको हम बचा पाएंगे और तभी हमारी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो जिंदगी का एक थम जाएगा। नेक्स्ट, फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें पानी चाहिए इरिगेशन के लिए। अगर ये पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो आप खारे पानी से खेती नहीं कर सकते हैं। माइंड इट, आप नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर समुद्र का पानी ले आए, नहीं, वैसे नहीं होता। नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, आपने देखा इंडस्ट्रीज में भी नीड वाटर। इवन इन डे टू डे लाइफ जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें पानी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी तो कंजर्व करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, मैंने ऐसा कहा कि हमारी पूरी इकोसिस्टम थ्रेटेंड होती है। अगर ये फ्रेश वाटर नहीं हो तो पूरी की पूरी लाइफ थ्रेटेंड होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम वाटर को बचाएं। नेक्स्ट, फॉर अ हेल्दी लाइफ, मैंने कहा वाटर बॉर्न डिजीज, अगर हम शुद्ध पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वाटर बॉर्न डिजीज से हमें मुकाबला करना पड़ेगा और वी डोंट हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो देयर इज अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वाटर। अब ये वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या करना है? ऐसा नहीं है कि वाटर कंजर्वेशन this particular thought, water conservation, is a modern idea. No. In ancient India also, people were knowing about the importance of water and they were having extensive hydraulic structures for conserving the water. यानी ऐसी संरचनाएं उन्होंने बनाई ताकि वो पानी को सुरक्षित रख सके, संरक्षित कर सके। जैसे आप बहुत कॉमन देखिए, ट्रेडिशनली कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, ये क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये ट्रेडिशनल वेज हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचाए रखने के लिए। तालाबों में क्या है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो एक्सेसिव वाटर होती है उसको आप स्टोर कर लेते हो। उससे क्या होती है? उस इलाके की ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होती है, लोगों को पानी की उपलब्धता हो जाती है, इरिगेशन की भी सुविधा मिल जाती है और इवन वो क्लाइमेटिक कंडीशन को रेगुलेट करता है। अगर आपको याद हो सीपी और कुछ, तो वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी वो कंट्रोल करती है। तो these are some ancient methods. तो next we will see the ancient methods or ancient hydraulic structures that have been used for conserving the water, and we will also see the modern idea how to conserve water. For that we will see about multi-purpose river valley projects, its advantages, disadvantages, and one more important skill that is called rain water harvesting that we will discuss.